you recently sold Sirona for 450 crores. Talk to us about this idea. आज भी इंडिया में सॉफ्ट टॉयलेट्स नहीं मिलते हैं। The decision to sit and pee in an unfriendly toilet should be left to the lady. Takeaways for early stage founders from your fundraising journey. But as a founder, if I can tell you something, यार, you need to stick to your धंधा, your way. किसी भी धंधे को सेट करने के लिए 1000 दिन लग जाते हैं, और वो उस दिन से शुरू होगा जिस दिन आप उसको फुल टाइम करते हो. 1000 days. Today's guest at the Accelerate podcast is Deep Bajaj. Deep is the founder of Sirona Hygiene, which runs multiple brands like Peabody, Blue, and Empower. The team at Sirona pioneered the category around women's hygiene and women's wellness in the country and have built a large, profitable business over the last 2 years. A couple of years ago, they sold a business to Good Clan Group for 450 crores and recently bought it back for less than half the price. There are going to be 3 things that young founders can learn from today's episode. Number 1, how to build a D2C brand in 2025 and think about product, marketing and distribution. Number 2, how to go about fundraising and build your business in a capital efficient manner. And finally, number 3, exit opportunities for founders in the D2C space, whether through acquisitions or SME IPOs. So we hope that you enjoy the podcast today and it inspires you to create your own brand. So just talk to us about this idea, like कैसे genesis हुआ और क्यों लगा कि इस कैटेगरी में कुछ बिल्ड करना है? कोई ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन किसी दिन कहीं पे तारा टूटा और मुझे दिख गया. I think it was again work in progress. Events करते थे, large scale concerts, टॉयलेट्स को साफ रखना बहुत फाइट होता था, तो प्रॉब्लम देखी हुई थी. Then handmade जब कार्पेट शुरू किया राशि के साथ, so it was her business, her idea, everything. But you know, I was the unpaid telecaller. तो sales you good at, गुड नहीं है. I can hear no's. So sales में कुछ किसी को अच्छा नहीं होना होता. आपको ना सुनने के लिए मोटी चमड़ी चाहिए होती है जो धीरे धीरे बन जाती है. Maybe there's a skill set in fundraising as well, right? Correct, of course. हर चीज में यार, at every time you're selling, you know. So all you need to do is just sell to your strengths. किसी वो बहुत अच्छा, और कोई ना कोई तो बिलीव करेगा, राइट? कोई ना कोई तो लेगा. 100% करेगा यार. कैसी बातें कर रहे हो आप? आप तो चैंपियन हो ना, विनर हो आप तो. You know, जीत ही गए थे, स्पर्म एलोकेशन में जीत गए थे. So तब से विनर रहे हो आप. So I think where it is कि यार, so वो कार्पेट्स किए थे. And I'd seen, so during carpets also, you know, we had one miscarriage. And I'd seen how UTI can, you know, be a really spoiled sport for women. My mother had arthritis. तो ये 2-3 चीजें थी जो लाइफ में पैरेलल चल रही थी. So 2013 के, बहुत बार बोल चुका हूँ, तो जल्दी से बोल देता हूँ. 2013 के रोड ट्रिप के अंदर we were 4 couples traveling. I was still trying to figure out what is my own business because carpets was Rashi. And I was trying my hands at multiple things. So now I'll come to the failed ones. I tried at you know, putting some time of mine in a holiday home project. I tried my hands at a coaching academy. Wow. Didn't work. Do I see them as not working? No, I think they were such invaluable lessons. That's what I was discussing. Would love to understand your startups. Yeah, I think every phase of our life has taught us something that today is helping us. Yeah. Which you won't even realize. Correct. But आपके पहले स्टार्टअप ने, आपके दूसरे स्टार्टअप ने, चले नहीं चले तो यार आउटकम है. और उस जर्नी ने बहुत कुछ सिखाया होता है. Correct. So मेरे लिए भी इवेंट्स ने, देन कार्पेट्स के टाइम पे ट्रैवल, 1 UTI, मॉम विद आर्थराइटिस ने ये सिखाया होता है कि टॉयलेट्स इज अ प्रॉब्लम. तो 2013 के इस रोड ट्रिप पे, व्हेन 4 couples were traveling and boys were drinking whatever they could get their hands on, beer, and girls are not even having water because अगर पानी पिएंगे तो they'll have to use the washroom. My God, yeah. So उस वक्त I was just joking कि God loved men more. हमें कितना cool बनाया. कहीं भी खड़े होके we can pee, and girls, you know, and every second trees are urinal. Not that I'm proud of it, but है convenience. Yeah. So ये सब बातें चल रही थी. तो एक friend की wife ने बोला, गौरी उसका नाम था, कि यार अरे no, I had seen somebody use a contraption in Europe to stand and pee. Wow. So I think for me somewhere, and there must be thousands of jokes जो डिस्कस किए गए होंगे उस ट्रिप पे. पर this stayed because you identified with the problem personally and because of your experiences. Correct. तो कहीं ना डॉट्स ज्वाइन हो ही जाएंगे eventually. तो ऐसे ज्वाइन हुए होंगे कि इवेंट्स के दिन याद आए होंगे. और याद आया होगा, you know, ये अर्थराइटिस वाला टाइम और ये UTI वाला टाइम, एंड देन ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी के टाइम उठना बैठना बड़ा मुश्किल होता है. तो करना चाहिए. सो वहां से Peabody की शुरुआत हुई, which became India's first stand and pee device. पेटेंट के लिए अप्लाई किया, वो नहीं मिला, डिजाइन पेटेंट मिला, तो we started basis that कि यार हाँ बोलिए. No, but like it's very interesting, right? And obviously, like I can see that everything that you have done, you've, you know, like you know, put your heart and soul into it, right? But like कैसे कन्विक्शन आया कि ऐसी कैटेगरी में कुछ करना है जहाँ पे कोई इंडिया में कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, राइट? एंड एसेंशियली मे बी ग्लोबली भी बहुत कम पैरेलल्स हो. लाइक ऑब्वियसली यू आइडेंटिफाइड विद द प्रॉब्लम पर्सनली, राइट? बट लाइक वाज इट रियली अ बिग बिजनेस एट दैट टाइम? डिड यू इवन थिंक अबाउट इट कि बड़ा बिजनेस बन सकता है, नहीं कि बट मजा आएगा इसमें ये करना है? नहीं यार, ऐसा अगेन लाइक आई सेड ना, ऐसा सोचा नहीं था कि इतना बड़ा बिजनेस बनेगा, या कभी या बिजनेस के ऐसे सोचा ही नहीं था. हो सकता है आई वाज स्टिल फिगरिंग आउट. ये आइडिया आया, मुझे लगा इस पे काम करना चाहिए, तो काम किया मैंने, बस दैट्स इट. एंड आज देयर आर, यू नो, सो मेनी ऑफ दीज
इकोसिस्टम एनेबलर्स हुआ Yeah, देयर, correct, उससे कोई था ही नहीं, तो उससे तो बिजनेस करना था, उससे पहले इवेंट्स का बिजनेस किया था, फिर कार्पेट्स का बिजनेस किया था, तो बिजनेस है, यू नो। आई थॉट ये करता हूँ एंड प्रोडक्ट बेचेंगे, दुकान पे बेचेगा एंड कस्टमर्स वुड लाइक इट बिकॉज़ व्हेन आई वुड टॉक टू वुमेन, आज भी इंडिया में सॉफ्ट टॉयलेट्स नहीं मिलते हैं। करेक्ट। अभी लाइक यू लुक एट कॉन्सर्ट्स लाइक दिलजीत का कॉन्सर्ट और कोल्डप्ले का कॉन्सर्ट, आई मीन लाइक टॉयलेट्स आर एक्चुअली वेरी बैड एंड यू वुड गो टू द फर्स्ट टॉयलेट एंड देयर इज अ ह्यूज क्यू एंड यू नो द सीट्स आर रियली अनफॉर्चुनेटली दे आर बैड एंड द एक्चुअली द टॉयलेट्स फॉर women actually they have longer queues as compared to the urinals for men. करेक्ट। सो यार आई थिंक साफ भी हो ना भी हो, मुझे लगता है कि आप द डिसीजन टू सिट एंड पी इन अ अनफ्रेंडली टॉयलेट शुड बी लेफ्ट टू द लेडी, है ना। आप और मैं नहीं बोल सकते ना साफ तो है, अब उसको नहीं अगर कई लोगों को वो भी होता है कि भाई घर पे ही आई कैन यूज द वॉशरूम, मुझे बाहर के टॉयलेट्स नहीं अच्छे लगते। सो आज भी सिचुएशन इज फार अवे, अगर साफ टॉयलेट्स भी हैं तो मेरे लिए तो अनफ्रेंडली है। आप साफ टॉयलेट भी 2 मिनट के लिए छोड़ दो, अगर आप प्रेग्नेंट हो, यू नो, और आप लास्ट ट्राइमेस्टर में हो, आप 7वें महीने 8वें महीने 9वें महीने में अगर आपको ट्रैवल करना है, उठने बैठने में प्रॉब्लम है बॉस, यू नो। अगर आपको अर्थराइटिस है नीज में, तो आप 60, 70, 80 ईयर ओल्ड लेडी और आप कैसे भी फ्लाई कर लो कितने भी अच्छे होटल में, उठ बैठ नहीं सकती हूँ। मेरी 2 साल की डॉटर है, राइट, सो एंड लाइक उसको भी लाइक वी यूज द पीबडी टॉयलेट सीट्स एंड एसेंशियली व्हेनेवर वी हैज टू गो टू पी, लाइक हम उनको वैसे ही कराते हैं, नो, सो लाइक दैट्स अ यूज केस एज वेल, लाइक वी नेवर थॉट कि हो सकता है। करेक्ट। And I'm telling you, so and first of all, congratulations. Daughters are super special. I have 2 of them. So, so क्या करेंगे इतने पैसे का बॉस? बहुत पैसे आएंगे अब, लक्ष्मी आती है ना जो बोलते हैं। So no, yeah, so I think and then let's say if you have arthritis, तो फिर और प्रॉब्लम है, उठना बैठने का प्रॉब्लम है, तो ये सारी प्रॉब्लम है। आप किसी भी स्टार्टअप से हो, ये प्रॉब्लम्स आज भी हैं। So P-Buddy was just a you know thought where I thought इतना सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगेन ये टैम सैम सॉम, ये आज के कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक एनालिसिस पैरालिसिस के कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट। करेक्ट। सो मेरे केस में इट वाज एन अपॉर्चुनिटी। पहले जब मैंने इवेंट सोचा था तब भी मैंने कोई इतना सारा गणित नहीं लगाया था कि इवेंट्स 10,000 करोड़ की कैटेगरी और मैं उसमें से कितना करूंगा। आई जस्ट थॉट ये इवेंट कैटेगरी में ये मैं बेच सकता हूँ। कार्पेट्स में भी सिमिलर था, एंड कार्पेट्स में वी वर ट्राइंग समथिंग अगेन अगेंस्ट द थिंग, यू नो, वी सेड दैट शी विल बी इंडियाज फर्स्ट फीमेल कार्पेट डिजाइनर, कस्टमाइज करेंगे कार्पेट्स। तब लोग घरों के लिए भी इंटीरियर डिजाइनर ज्यादा यूज नहीं करते थे। So same P-Buddy case में था कि it's very different and it's the need of the hour. I think for the first time maybe I would have found something where I see it complements my personality. You know, I would love to champion this cause at least कि यार मैं करूँगा, मुझे मजा आ रहा है इसमें। Again, you know, पैसा आ रहा नहीं आ रहा मैं नहीं सोचता था तब भी और अभी भी नहीं सोचता हूँ। I think that came across in a story as well. You were always very mission driven in your content as well. Like you were customer first. You were solving the problem for the consumer in terms of content and product. चाहे I mean like कितना बड़ा business बने, like maybe it came on later. Correct. और वही तरीका भी है ना यार। मैं again आपको बोल रहा हूँ, आप अपनी स्ट्रेंथ्स में खेलो। मेरी स्ट्रेंथ्स उस वक्त ये थी यार कि मैं दे सकता हूँ, मैं करूंगा इसको, आई विल डू इट। सो 1-2 साल मुझे लगे टू कम टू दिस स्टेज वेयर आई रियलाइज आउट ऑफ द थिंग्स दैट आई वाज डूइंग। सो 2-3 स्ट्रेंथ्स मैंने अपनी रियलाइज करी रिसेंटली, यू नो, व्हिच इज अबाउट 10 years ago, कि यार आई कैन डू वन थिंग वेल एट अ टाइम। सो आई वुड नॉट बी एन ऑपरेटर एट 3-4 businesses at the same time. You maybe you can do it, that's your strength. Correct. So first and foremost is play to your strengths. And then number 2 is यार again जितना, और अगर आपने उसको फुल तो 2015 तक then it was clear that this is what I will do. So 13 is when we started the journey, 14 we got a design period, 15 I registered the company. It took me 2 years to exit out of everything else. Wow. And start focusing on what is today known as Sirona full time. So that was the strength to say that yaar, this is the problem. I think if I completely focus on it, I'll be able to solve it. And that's my strength. I can pick up the call. और धीरे-धीरे I would say chapter by chapter खुलते रहते हैं। कई बार हम बस कोशिश ही करते हैं, हमें लगता है पूरी किताब कोई पढ़ा दे तब मैं शुरू करूँगा, और वो नहीं है, बिकॉज आप बहुत यूनिक हो यार। हम दोनों अगर जुड़वा भी होते हैं ना, तब भी हमारा DNA अलग है, फिर भी अलग है, यू नो, मतलब अगर सेम पेरेंट्स के भी से, you know, if you're elder, junior, whatever, you know, अब siblings भी हो, तब भी दोनों के अलग-अलग स्किल सेट्स हैं। So I think the name of the game is you start and go chapter by chapter and the rasta will unfold, which happened in our case also. Eventually. So got it. And how was the 0 to 1, right? Like obviously like you love the 0 to 1 journey. तो product बना लिया, design patent आ गया, but उसके बाद like orders कैसे आने लगे? Like how did you get an initial set of customers? कोई 0 to 1 जर्नी नहीं थी। लिस्ट बनाई हमने कहाँ बेच सकते हैं, तो उस वक्त ऑनलाइन B2C था, कुछ नहीं था। 2013-14 में तो नहीं था।
सो वेबसाइट्स पे भी कैटेगरी नहीं थी, अभी तो कपड़े लेना लोग शुरू कर रहे थे या जूतों की भी बात हो रही थी. Myntra and all were coming up at that time. Correct. You know, that was the ecosystem just getting created and we were so low on the thing and then a taboo category. कौन खरीदेगा, customers नहीं थे, credit cards जितने थे, digital payments नहीं थे, you know, all of that was like delivery कैसे करोगे, return logistics, all of that was just getting done. So we started from the other end of the spectrum. हम offline गए, मैंने सोचा यार offline available कराऊंगा, वहाँ से बिकना शुरू होगा. So offline, then I started talking to event companies because I was from events background. So you know, can you place the product at events? Yeah. Correct. So I think Standard Chartered, Bombay Marathon, Airtel Delhi Marathon ने खरीदा पहली बार. Okay. तो वहाँ से वो थोड़ा take off मिला. फिर हमने सोचा डॉक्टर से बात करते हैं because arthritis in pregnancy में काम आ सकता है. वहाँ थोड़ा traction आया. तो फिर करते करते online आ गए तो फिर भी move to online. वहाँ से traction आना शुरू हुआ. Then we moved more towards Amazon, Flipkart, Nykaa. मुझे वो अच्छे से आता था. I was not very good at Meta. So I thought ये आ रहा है मुझे, मैं इसी को डबल डाउन करूंगा. And I think this is where it became our strength. So while you know, competition and a lot of new players started spending money on Meta, I don't think that was my strength. So I didn't focus too much on it. I said my strength is this. This is a relationship game. Relationship में अच्छे से खेल सकता हूँ. And I just over-optimized on that and eventually created this company called Sirona, which looks at solving a lot of unaddressed female hygiene issues right from puberty to menopause. तो हम हर कैटेगरी में आइडेंटिफाई करते हैं कहाँ गैप्स हैं और उनके लिए यूनिक प्रोडक्ट्स आते हैं बिकॉज हम यूनिक प्रोडक्ट्स लाने में और बेचने में आज ज़्यादा सक्सेसफुल हैं एज अपोज टू मी टू प्रोडक्ट्स. Got it. But like ये बहुत interesting है, like this evolution, right? Like essentially it started with a urination company and essentially helping women peeing while standing, right? Essentially with the Peabody product and then toilet seats and all. But then essentially it evolved into a period care, menstruation, you know, sanitary pads, menstruation cups, and then safety and you know, condoms and lubricants, and now you have the full stack of female hygiene products, right? Correct. So ये evolution कैसे हुआ? Because like this is like एक product से 50 product, right? And essentially, obviously like एक बात तो है कि great founders keep evolving and you know keep increasing their market. But आपने पहले कैसे किया? Like पहले did you decide कि हम जितना भी ये वाला category है, Peabody वाला products हम इसको launch करेंगे, उसके बाद हम मेंस्ट्रुएशन में जाएंगे, लाइक वाज इट लाइक स्ट्रेटेजिकली दैट वे या फिर आपको लगा जहां से कस्टमर डिमांड आ रहे हैं हम पहले उन प्रोडक्ट्स को स्केल? यार शुरू में कोई मेथड नहीं था, यू नो, शुरू में इट वाज जस्ट अबाउट सेइंग मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं जो मुझे लग रहा है कि ये वुमेन फेस कर रही हैं. एंड आई केप्ट टॉकिंग टू माय वाइफ, अदर कस्टमर्स, you know, who were very happy to give feedback. So first 3 products came out of personal experiences. Stand-in Pee, period pain relief patch, because my wife has first day, her period pain is very turbulent. So I came with these herbal period pain relief patches. वो भी इंडिया के पहले थे. Then disposal bag, she because she's very finicky about cleanliness, so you know diapers या pads कैसे फेंकें. मतलब personal experiences. Personal. उसके बाद यार I think as you went in, I think चैनल जैसे जैसे खुलते चले गए एंड कंज्यूमर जैसे जैसे फीडबैक देता गया, अगर उस चैनल में हम उतार सकते थे प्रोडक्ट भी करते गए. सी अर्ली ऑन टू लॉन्च वन प्रोडक्ट ऑफलाइन मेंट अगर आप 10,000 दुकानों पे तो 10,000 यूनिट चाहिए एक प्रोडक्ट के. करेक्ट. आज भी वो ये रिटेल में तो रिटेल में इवन क्विक कॉमर्स में भी यही है, राइट? आज वो हो गया वापस बिकॉज़ सो मेनी, अगर दे हैव 1000 डार्क स्टोर्स, इफ एवरी डार्क स्टोर दे गिव यू 2 or 3 products, you're looking at 3,000 of one unit. Yeah, correct. So, but in my case, luckily, I think e-commerce was evolving, where you know, if it was no more about saying you needed 1 lakh units to make sense out of this, I could test launch, and learn very fast. So you could do it with 500 products. Look at what the consumers are seeking, and if the name of this game is to have width, we went with the width. You know. And then depth was built offline, yes. And how did you kind of get that feedback from the consumer? Like what was that feedback look? How did you know कि consumer को ये product चार्ज चाहिए? यार आपने 10 कस्टमर से ही पूछते रहोगे ना रेगुलरली, तो दे विल टेल यू उनको क्या चाहिए. उसके लिए 1 लाख लोगों से बात करने की जरूरत नहीं है. लाइक टॉयलेट्स की क्या प्रॉब्लम है, अगर एक लड़की आपसे शेयर कर रही है उसकी तो सारी प्रॉब्लम की लिस्ट बना लो. राधन सिंह जब ये 100 आएगा फिर मैं इसको कोलेट करूंगा, फिर उससे सेंस निकल के आएगी. करेक्ट. सो आई थिंक हर जैसे जैसे लोग आते चले गए प्रोसेस भी बनते चले गए. टुवर्ड्स द एंड हम 100 लोगों से 500 लोगों से बात करते थे, फिर हम रिसर्च भी करा लेते थे. बट शुरू में ऐसा नहीं था. शुरू में टीम में अगर 10 लड़कियां थी, वो 10 लड़कियां ही कस्टमर्स थी. वो 10 लड़कियां अपने 10 लड़कियों से बात करती थी, तो ऑफ कोर्स यू नो 20 नंबर ऐसे बढ़ते थे कि अगर 10 are talking to 10, there are 100 sample set is there. You know, so with every stage it kept changing. And depending on the channel where we are at, we also we merged the two. कि consumer insight आ रहा है, क्या इस channel पे हम इसको अच्छे से कर सकते हैं? अगर answer to that was yes, so we do it. Then हम channel से भी पूछते थे कि यार what are the gaps and emerging trends that you are looking at it, and we take those back to our people also. And फिर beyond a point कई products में इतना सारा experiment नहीं करते थे. We should just launch and learn. इसी तरह हमने बहुत categories ही बनाई, like toilet seat covers, Peabody के were the category creators. We were the first to introduce branded. Congratulations, we still use it. Yeah. You are so kind. You know,
toilet deodorizers as a category didn't exist, you know. Then we looked at अगर आप इधर आएं तो period pain patch didn't exist, disposal bags didn't exist for sanitary products, you know, and then of course multiple other products. जैसे baby diapers, now you have a daughter, you know, baby diaper rash cream बहुत है, पर लड़कियों को सदियों से ये सालों से you know सदियों से इनफैक्ट रैशेज हो रहे हैं because of you know period products that they use, पैड से हो जाते हैं, कई बार किसी और चीज से हो जाते हैं, कई बार सिर्फ शेपिंग से हो जाते हैं, पर कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। तो हमने इंडिया का पहला नेचुरल एंटी शेफिंग क्रीम बनाया, यू नो, दाग अच्छे हैं, नेशनल कैंपेन है, पर पीरियड स्टेन के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो हमने पीरियड स्टेन रिमूवर बनाया। सो सम ऑफ दीस प्रोडक्ट्स डिड नॉट बिकम ग्रेट नंबर कॉन्शियस, बट व्हाट दे डिड इज दे जस्ट नॉर्मलाइज्ड द नीड फॉर द प्रोडक्ट। सो कई जगह इंसाइट आया कैटेगरी से और कई जगह इंसाइट आया कस्टमर से, and we merged the two. I think we were just fast at one point to launch products very fast. As you scale, you become slow. I think again this is very like contrarian, right? Because आज अगर आप एक इन्वेस्टर्स होते हैं वो बोलते हैं go deep into one category, like एक set of category पकड़ो उसमें 3-4 प्रोडक्ट लॉन्च करो। Like I was listening to Suhasini is a good friend from Yoga Bar, and she said कि we did bars only, you know, and got like 60-70% market share on one category, and that kind of fueled our acquisition, right? But this is again very contrarian that you went horizontal first across multiple, and then wherever the customer need is, then you kind of went deep into those categories and those channels. So we also went deeper, a lot deeper. Like menstrual cups, before acquisition, we were the largest selling menstrual cups brand in the country. You know, by then I think 3-4 million women had moved, which is a huge shift, considering that you know we are a very, very, very deep pad usage country. So those many women had moved to Sirona Cups from a very low funded startup. So I think right content, right place, right time, right communication worked in our favor. Now for her, you know, I think Suhasini and all the other guys who go in deeper, I would say absolutely, yeah. If that's your strength, do it. If you're in a category that is where it is the need of the hour, do it. Yeah. In my case, we were trying to say that awareness about the category itself. Correct. We were saying that can we be the destination for any hygiene issue that is neglected for you. वो आपका top of the funnel बन गया. Correct. और उसमें से फिर कप निकला है, उसमें से फिर intimate washes निकला है, उसमें से razors निकला है. So all that came out of that funnel only, who started trusting us. कि यार कोई भी यूनिक प्रॉब्लम है तो हमारे पास लाइक आई सेड, क्योंकि वो पैसे नहीं थे D2C वाले, सो इट वाज नेवर अबाउट सेइंग कि यार लेट्स रन Facebook campaigns and bring customers from I think your content strategy was also mind blowing, right? Like my wife Tanya, she used to consume a lot of your videos where I think you would like essentially like people whatever they're searching on different platforms, आप उसके YouTube videos बनाते थे which were doctor led, you know, like which is actually again building a lot of trust in that category. People will find influencers और उनके साथ content बनाएंगे, आपने actually बहुत trustworthy content बनाया, you know, resolving customer queries. And I think that was also something that really built trust for the brand. Well, I think which is also thanks to our customers only. मेरे को लगता है 4 तरह के कस्टमर होते हैं हर बिजनेस के. You know, एक पेइंग कस्टमर है, एक टीम है, वो भी आपकी कस्टमर है, उसको तो बेच रहे हो ना सपना आप, एक इन्वेस्टर्स हैं, और एक ऑफ कोर्स ऑल द ये जो आपकी कम्युनिटी के लोग हैं या जो मार्केट प्लेस के लोग हैं या जो मीडिया है, इसको इंडस्ट्री फ्रेंड्स बना देते हैं. 4. You have to somehow ensure that you're listening to all 4 as much as you can. So this Dr. Diksha, who's the one, you know, who helped us set our foundation also, and who made all these videos, who's an MBBS MD, she's a gold medalist from Safdarjung Hospital. Wow. She's the one who reached out, and you know, I tried to reply to as many messages or feedback that I get. And I called her. She was a customer. She was a customer. Wow. We just met, and she said, "This is what I do." I said, "Why don't you start helping me with this problem?" So उस वक्त नहीं सोचा था कि content बनाना है. उस वक्त हम सिर्फ ये कर रहे थे और लोग के searches बढ़ रहे थे. I didn't know how to do it. She is the one who came and did it, and touchwood it started to work. In another case, I in fact had my team member who was a customer again, somebody else. तो हमने menstrual cups के ऊपर कुछ terminology लिखी हुई थी. अब उस वक्त यार as 2015 की बात कर रहा हूँ, जितना दिमाग में आया उतना हमने लिखा, you know, because it doesn't impact your virginity को. We were trying to write it in a way which doesn't, you know, impact sensibilities of everybody. So we used some terms. And she reached out that this is so regressive, you know, how could you write things like that? I called her to the office. Eventually Sumbul became the head of content. Then she started writing content which she thought was correct for everybody. So I think customers to employees, that's a really amazing journey. वही है यार, और कुछ है ही नहीं, you know. I think so जहाँ पे कंटेंट को यूज किया उस वक्त के लिए वो जरूरी था. So we just did it very sincerely. Then फिर वो नहीं देखा गया कि यार क्या हमारे पास आज, you know, if there were searches happening on let's say vaginal discharge में क्या करें, कि आज white discharge अगर आपको हो रहा है तो हमारे पास अगर प्रोडक्ट नहीं है तो फिर नहीं है. फिर you have to say puberty to menopause अगर आप unaddressed problem solve कर रहे हो, so let's make content on every unaddressed problem that this leader thinks needs to be made. And the leader for that topic was Dr. Diksha, end to end.
उसमें फिर मेरा दिमाग नहीं चला, ना किसी और टीम का चला। करेक्ट। सो आई थिंक वो उस वक्त के लिए कंटेंट इंपॉर्टेंट था, कंटेंट किया, फिर बाद में जैसे जैसे चीज़ें इंपॉर्टेंट रही वही करते गए। Got it. Just talk to us about, like your growth as well in terms of your revenue, what channels were working for you initially and how, like, as you evolved as well, and like maybe like your profitability metrics as well. सो यार अगेन क्योंकि शुरू में तो पैसे नहीं थे तो प्रॉफिट वाज द ओनली वे टू ग्रो। देन थोड़ा सा विदिन 2017 वी रेज अ स्मॉल राउंड फ्रॉम इंडियन एंजल नेटवर्क, वहाँ से थोड़ा थोड़ा ग्रोथ आया। This is at like how much was the round at that time? It was just 2.9 crores। तो उसमें भी लो वैल्यूएशन थी बिकॉज वी हैड 3-4 प्रोडक्ट्स और तब में थोड़ा बहुत कम 15-20 लाख पर मंथ की सेल थी सॉर्ट ऑफ नंबर। आप लोगों का रेवेन्यू अच्छा मतलब अराउंड 2 करोड़ का 2.47 था। देन नेक्स्ट व्हेन IN came in, then next year became 7, then became 14, then became 27, then became 44, then 77, then 100, whatever। Wow, yeah, that's how it worked। And what channels used to work for you? Marketplaces, we were always very marketplace focused for the longest time। And then funding wise 2.96 from IN in 2017, then 1.9 crores was a bridge in 2019। 21 is when we got IN and NB Ventures to come together and give us our Series A, which was the first big round we raised, which is about 20 crores for us। 10 crores was in the bank, 10 crores had to come later, and out of the 10 crores we had money in the FD, I think 80% of it। And I think and that's another very interesting thing that you almost build like a 100 crore company without deploying a lot of capital, right? So obviously you were profitable, you were capital efficient, and maybe I think when you got that exit, that's why like a lot of your early stage investors, US founders and employees made decent returns because you were so capital efficient. अगेन यार कोई ऑप्शन ही नहीं था। सो आई थिंक ऐसा देखना अगेन एंड यू हैव टू प्ले टू योर स्ट्रेंथ। सो आई कांट स्लीप व्हेन आई नो दैट आई डोंट हैव द रनवे। So and you lose runway if you lose money। So it's just playing to your strengths। If you're somebody who can burn and who can scale, please do it। as long as you do it with enough ways to ensure that the things don't go awry। So in our case it did work to our advantage because I think जो उस वक्त लग रहा होता है ना अभी शार्प है वो बाद में कब एडवांटेज बन जाता है पता ही नहीं चलता। जैसे हमारे केस में शुरू का हमने बहुत लो वैल्यूएशन में पैसा उठाया तो लगा अरे यार बहुत कितना वैल्यूएशन था? वी वर 10 crores। Okay, this is when you were doing 2.5 crores। Okay, मतलब वो प्री मनी पोस्ट मनी के बाद अलग था। देन वी हैड आल्सो गॉट अ क्लॉ बैक, वो भी किसी एडवाइजर ने, ईशान वाज हिज लीड इन्वेस्टर हु सेड वैल्यूएशन कम है, काम करो, अगर तुम इस माइलस्टोन पे पहुंच गए तो हम तुम्हें 3% क्लॉ बैक दे देंगे। तो वैल्यूएशन 15 करोड़ के आसपास आई। देन बाय द टाइम वी वर रेजिंग अ ब्रिज, कंपटीशन वाज रेजिंग एट far higher valuations। So we were thinking यार कि सही है गलत है, but then I think आज वही advantage मिली कि यार at the time of our exit we had investors who would come in early। So उनके अच्छा खासा multiple बन रहा था। Somebody came in at 15 crores and उसको secondary 100 crores में मिल रहा है। It's a 5x, 6x। I think made it super easy to then go through this decision and like raise future rounds as well। Correct। So even if आप primary और ज़्यादा पे उठा रहे हो but अगर secondary जो जिसमें shares कोई बेचता है market में अगर वो उसको थोड़ी कम 50% डिस्काउंट भी है तब भी वो तो ये देखेगा ना कि मैं कितने पे घुसा था। करेक्ट। अगर आप किसी कंपनी 15 पे घुसे और आपको 100 पे रिटर्न मिल रहा है तो आपको तो 5x हो गया। करेक्ट ले दो, आई एम आउट। पर अगर आप 70 में घुसे हो और मैं आपको 100 पे निकल जाऊँ, ये बड़ा यार 30% भी नहीं आया 3-4 साल वो निकलेंगे नहीं और फिर वो that will never materialize। So कई सारी चीजें यार at the way it happened worked in our favor at the time of exit। we were building, revenue was fine, we had enough money in the bank, we were not desperate। So we were also able to negotiate a little and the fact that we are building profitably was also was seen as a huge advantage because of course the guy who's buying also speaks to everybody in the industry। Correct। So we were able to command a premium because of all these। So you're correct। Got it। And like what were like in terms of your profitability, like what are some metrics that you used to track, especially for early stage founders as well, right? Like are there any like benchmarks की gross margin है product में इतना होना चाहिए, marketing spend should not be a percentage of revenue, repeat इतना होना चाहिए, like ऐसा कोई ट्रिनिटी है which founders can like when they building consumer brands today that they should look at कि इतना तो होना ही चाहिए, otherwise it will be difficult to build a profitable I would say business। यार consumer product में category wise वो differ करता है because marketing spends bit vary, but I think the मोटा मैथ यही है, 2 रुपए की चीजें 4 रुपए में बेच लो, 1 रुपए का खर्चा 1 रुपए बचा लो। That's what it is। And in every category वही करना है। अब ये परसेंटेजेस ऊपर नीचे हो जाएंगी, but I don't believe कि कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट लॉस पे देके कभी भी लॉयल्टी बनी है हमारे देश में। because there'll always be somebody who will be willing to sell it cheaper। So depending on your category, like if you're in let's say beauty and personal care just for discussion, तो बोलते हैं 60-70% 80% gross margin होना चाहिए। तो उस रेंज में हो तो ठीक हो। मार्केटिंग if you're doing marketplaces 10 से 30% के beyond tacos नहीं जाना चाहिए, तो मत जाओ। You know, शुरू में जा रहे हो but you need to keep an eye on it कि at some point it needs to come back।
करेक्ट योर एक्सपेंसेस योर सैलरी शुड नॉट बी मोर देन दिस पर्टिकुलर परसेंटेज डिपेंडिंग वेयर यू आर और अगर पैसे नहीं है तो सारी मैथ वैसे ही हट गई You know, talk to us about your fundraising journey as well, right? Like you raised 2.9 crores pehle IN से, then you set a pitch round of 1.9 crores, and फिर later on a larger round, right? So just like, and ये एक ऐसी कैटेगरी थी जो शायद एग्जिस्ट नहीं करती थी इंडिया में, राइट? सो व्हेन आज हम इन्वेस्टर्स हम देखते हैं, हम बात करते हैं कि अच्छा इंडिया में कौन से इंकम्बेंट ब्रांड जिसको आप डिसरप्ट कर रहे हो, या ग्लोबली कितने बड़े ब्रांड्स बने, वो सब कुछ नहीं था. तो आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू वुड हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ फंड रेजिंग. सो जस्ट टॉक टू अस, क्या चैलेंजेस थे, हाउ डिड यू ओवरकम, व्हाट वर योर लर्निंग्स, एंड मे बी लाइक सम takeaways for early stage founders from your fundraising journey? Yeah, the only takeaway is be ready to hear 99 yeses before you 99 no's before. तो उसको मैं 9000 बोल देता हूँ. You be ready to listen to 99 no's before you hear your first yes. कुछ भी कर रहे हो, किस भी कैटेगरी में बना रहे हो, be ready to listen to a lot of no's. Number 2, the only I would say advice that I can give as a founder. One is as an operator, I am telling you, be okay with 99 no's, वो normal है. But as a founder, if I can tell you something, यार, you need to stick to your धंधा, your way. बिकॉज आपको जैसे जैसे ओपिनियन मिलती रहती है ना, ये मेरे केस में हुआ शुरू में, बिकॉज आई वाज डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. जैसे जैसे मिलते रहते हो लोग, वो कंफ्यूज करते रहते हैं, बिकॉज वो अपने लेंस से आपकी कैटेगरी को देख रहे हैं. जैसे अगर सुहासनी के फाउंडर्स, ये सुहासनी के इन्वेस्टर मुझे मिले होते तो बोलते यार एक ही प्रोडक्ट बनाओ. करेक्ट. फिर मुझे कोई और मिला जिसने बोला अरे एक ही प्रोडक्ट, कैटेगरी डीप नहीं है. करेक्ट. यू नो, अब डीप तुम बनाओगे, फिर कोई और आके बना लेगा उसको कल को, तो मैं बोलता ब्रांड बनाऊंगा, ब्रांड कुछ नहीं होता इंडिया में. सो ऑल काइंड्स ऑफ पीपल. हमारे केस में आई थिंक मोर इन्वेस्टर डिस्कशन आई हैड अराउंड सीरीज है. उससे पहले एंजल में तो वी गॉट लकी. हम कोई मार्केट में पैसा उठाने नहीं निकले थे. यू नो, एक टाई द नॉट एक शो था CNBC यंग टर्क्स, उसके ऊपर पिचिंग कंपटीशन था. अमित टाई के एक वो थे टीम मेंबर, उन्होंने मेरे को फोन किया, अरे दीप आप टाई के इवेंट में आते रहते हो, व्हाई डोंट यू पिच? तो फेयर एंड आई पिच. तो वहाँ पे आयन था. उससे पहले आपने कभी लाइक यू नॉट इवन ट्राइड फंड रेजिंग, यू नॉट स्पोकन टू पीपल? नॉट रियली. आई डोंट थिंक वी वर मेकिंग फॉर्मल पिचेस और समथिंग. मतलब अगर था भी तो यार इट वाज मोर लाइक कि अगेन लोग मिलते रहते हैं एंड आई डोंट माइंड ट्राइंग थिंग्स. तो कोई मिला कि अरे फंड रेज के लिए डेक बना लो, तो डेक बना लिया थोड़ा सा, बट कभी भी क्या उसको फॉर्मली कहीं पिच किया, प्रेजेंट किया, नॉट रियली. यू नो, आई डिडंट इवन नो, आई वाज जस्ट यू नो टॉकिंग थ्रू अ फ्यू पीपल. तो वहां से आयन मिले, आयन ने टर्म शीट दे दी. From there, the whole understanding started, right? Tag, drag, you know, all the other all of these terms which are like too complicated for us to understand today. Yeah. Correct. Yeah. So basically, that's how IN came into our life. More discussions happened after that. I think once Bridge was also done, and so series में बहुत लोग मिले. तब भी category बनी. series आपको कितना था? 20 crores. Okay. अब हम 25 करोड़ के रन रेट पे थे. This is your last round before the acquisition. या उसके बाद आपने एक और किया था? नहीं बस last round before the acquisition. There I met a lot of investors where I think the learning is this कि यार तुम अपनी जो तुम बना रहे हो आप तुम देख सकते हो. आप जो बनाना चाहते हो वो आपकी यूनिक साइट है. And as long as you've done enough gut you know deep homework कि यार मैं दूंगा इसको 3 साल and I'll find answers. I think आप उसको execute करो, कम से कम मलाल नहीं रहेगा कल को. Otherwise तो यार story will keep on changing. So during series yes the category में लोग देखते रहे क्योंकि तब तक हमारे पास 6-7 products थे and they were all selling well. like multiple brands बन चुके थे यार. Multiple brands. We were always multiple brand. तो उस वक्त it was not even fashionable. आज तो fashionable है. करे house of brands थे. हाँ. का वैल्यूएशन हाई ज़्यादा हो जाता है. करेक्ट. तो तब ये था कि अरे किस पे फोकस करोगे? एंड वी सेड यार एक हमारा घर चला रहे हैं, एक हमें खुशी देता है यार कि हम टॉयलेट की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. Sirona is where we are going deeper and I can't say no to revenue. So the question was या तो मैं एक ही दिखाता and I didn't want to lie. I always said कि revenue wise कौन सा प्रोडक्ट था? Peabody इधर, बट उधर सिरोना के अंदर हमारे मेंस्ट्रुअल कप्स ट्रैक करने अच्छे शुरू हो गए थे. एंड वी आल्सो हैड अ बेबी हाइजीन ब्रांड कॉल्ड बॉडीगार्ड. तो वहां से बस वो रेवेन्यू आता था हमारे पास थोड़ा बहुत, एंड Peabody से थोड़ा रेवेन्यू, बट वी डिडंट वांट टू से कि व्हिच, वी सेड नो दिस इज दिस. बट एवरी मीटिंग पीपल आर लाइक अरे तीनों में कहीं डेप्थ ही नहीं है. यू नो, मतलब सिरोना भी कितना ही कर लोगे आप. यू नो, फीमेल हाइजीन, पैड बड़ी कैटेगरी, आप पैड में हो नहीं. एंड वी वर ऑलमोस्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम वी वर ऑलमोस्ट एंटी पैड्स. वी थॉट यार अगर नैरेटिव बदलना है, अगर कैटेगरी एक्सपैंड करनी है तो वो प्रोडक्ट लाके जो कस्टमर के लिए अच्छे हैं, नॉट आपके P&L के लिए अच्छा है. पैड आपके लिए अच्छा है बिकॉज आप हर महीने बेच पाते हो, पर लड़की के लिए कप्स बेटर हैं. Again very contrarian from that perspective. Yeah, conviction or whatever. Correct. So ये थ्योरी कई लोगों को नहीं समझ आई. I think that's the reason why we were not funded. But I like I said, वो eventually हमारे फेवर में ही काम किया कि हम हमेशा कम पैसों से ही रेवेन्यू लाना देखते रहे, और हम फिर उसको लाने के लिए वहां जाते थे जहाँ पे ज्यादा कंपटीशन नहीं था. यू नो, पैड्स में बहुत कंपटीशन है, we don't want to do it. It doesn't align with our values. ना तो unaddressed है ना टैबू है.
So in fact जब मैंने पहला पैड लॉन्च किया, हमने ब्लैक पैड लॉन्च किया था. अच्छा, वाओ. Well, pads are always white. अगर आपने अभी भी देखोगे mostly white, सब white ही हैं. So we launched black and baby pink. We said, what if women don't want to see blood? Yeah. So a lot of people had a lot of opinions, but I think which is true for everything. Now I'm invested in so many startups. I keep talking to funds. Every fund has a different thesis, today. So the advice is only one. My journey was this, by the way. I got a lot of questions on TAM, Samsung, and all those things. But then there were NB Ventures and IN who saw that they will find answers as founders. They were very, very supportive. Great investors for us. In your case, I would just say, कि बस the only thing is 99 no सुनने की आदत डाल लो and you stick to your story and just keep knocking. वो 99 no जब तक नहीं होते तब तक के लिए मत. And but yes, also with the right investors. Today अगर आप सीरीज ए के लेवल पे हो तो एंजल्स के पास मत जाओ. एंजल्स के लेवल तो सीड वाले लोगों को मत नॉक करो. Speak to the right people. Speak to right people. Right 99 no's. Correct. Got it. No, I think super efficient, interesting, and I think what is also interesting is I think raising at the right valuations, right? So again, I think coming back to that, because sometimes what happens is if you raise at a very, very high valuation, then it just becomes very difficult to raise a future round. It's almost like a monkey on the back. So I think you like आपका पहला round भी happened at a 4-5x of your revenue, right? Future rounds also happened. So जब वो exit मिला, so everybody got a big exit, and it just enabled future rounds pretty fast. So I think I speak to a lot of founders, and without revenue today, there could be valuations of 10 crores, 15 crores, 20 crores, which is not bad. As a founder, if you have the conviction to kind of sell that story, more kudos to you. But I think it's always good to be a little under the radar from from a valuation I would say perspective. always be under the radar. Only because of this. See, you have to understand. आप अपनी end game भी imagine कर लो और जिसको ला रहे हो उसकी भी end game imagine कर लो. As a founder आपको भी exit लेना है और as an investor उनको भी आपको exit देना है. आप exit लो ना लो, the minute आपने किसी के पैसे ले लिए, company is not yours alone. Now it's your responsibility to earn that money and give it to the person. Correct? अब आप ये सोचो, इस पूरे सिनेरियो को जितना आप एक्सेल शीट पे लिखोगे ना, क्लियर हो जाएगा कि मैं आज इस वैल्यूएशन पे उठा रहा हूँ. अब इस पैसे से क्या मैं इतना रेवेन्यू कर लूंगा कि अगली वैल्यूएशन इस वाली वैल्यूएशन को कम से कम डबल या ट्रिपल से बीट कर देगी. अगर तो ये कर देगी तो फिर भी चांस है. अगर आप कह रहे हो यार कि आज तो मैंने उठा लिया कि यार मैंने दोस्ती में उठा लिया पैसे 10 करोड़ पे और आपने उठाए छोटे पैसे और उसके बाद आपका रेवेन्यू हो गया 1 लाख रुपए. अब 12 लाख की कंपनी रेवेन्यू कर रहे हो आप. अब आप पैसा उठाने जाओगे मार्केट में. अब जो बंदा आ रहा है वो आपको 10 करोड़ की वैल्यूएशन में देगा. तो अब जो 10 करोड़ वाला है वो आपको 10 करोड़ के नीचे नहीं रेस कराने देगा और 20 करोड़ पे आपको मिलेगा नहीं. चिकन एंड एग. यही है प्रॉब्लम फॉर योरसेल्फ. करेक्ट. नो इट्स अ डेथ वारंट. व्हाई डू इट? सो कम वैल्यूएशन पे ले लो. एंड ऑफ कोर्स आई आल्सो बिलीव दैट इनिशियली अगर आपके साथ जो आए उन्होंने पैसा कमाया, they'll always be your cheerleaders. And I've seen it in so many companies. There's a company by the name of New Republic run by a very dear friend. We initially we got in people at very low valuation, but as he wanted money was available, and now it was available as CCDs. तो ब्लेंडेड देखोगे उसकी तो अच्छी वैल्यूएशन है आज उसके पास. बट अगर उसने पहले लो नहीं लिया होता तो उसने लो लिया एंड देन he showed that he was able to scale. Correct. And that stage investor said कोई बात नहीं यार, you take इसमें हम we'll do it as CCDs, we'll take it as a discount to next round. I've seen it play out in the other founders also, where we taken money at lower valuation, scaled the business to a level, and then took it at a reasonable valuation. That works for me because then I can bat for you. Then I can also go to my friends and say, yeah, I'm putting money. Do you want to put in? I've made 5x in this deal, so and found a track record of. Correct. I mean, I'll say that if I'm putting my money, then only I'll take it to my friends. Otherwise, I'm like, I can't do those other things. Yeah. Got it. Talk to us about your exit, the 450 crore exit. Yeah. पहले तो why did you decide कि बेचना है? Because obviously you've been growing, you're profitable, you have money in the bank, capital deploy ज़्यादा करा नहीं है, right? Essentially, so why did you decide कि बेचना है? And then maybe take us to the maths of the exit as well if you can. Okay, in whatever limited I can share, I'll tell you that while it's an open book. So by the way, 450 crores did not come to my bank. Very important. It went to many people. And the reason to do the deal at that time was, we were doing well on marketplaces. I knew that run rate I can take it to 50, 70, 100 crores. And after that, I would have to take business offline because, we were largely back then in very non-Me Too products. जो हमारा share था, while we had a few Me Too products also, we had some shampoo conditioners which came in around COVID, but we are not doing numbers on them. Majority of our revenue came from your original core products, your IPs. So that had a limit, and then I saw here, I have taken angels, I have Series A, I have employees.
my family. You know, all these 4 are here, and then there is customers. When I did the math in my head, I looked at it like this: here, you know, if we are able to make money for the investors, whatever we do next, first of all, that money will be available. Employees, even if they make little money, at least they made money, which they were not expecting. Third was, of course, you know, in case and this could be like 4-5x of their salary. Correct. Easy, more than that. In some cases, more than that. So, you know, and then it was us also that we'll also be doing better. And then customers, I thought, यार अगर बात ये कि what will I be more happy with? एक 300 करोड़ 200-300 करोड़ का brand, which is built profitably, या maybe 1000 करोड़ का revenue है, थोड़ा सा उसमें, पर उसको वहाँ profitable 1000 करोड़, जब 1000 करोड़ profitable, उसके लिए offline चाहिए, उसके लिए content पे better supremacy चाहिए. We are very marketplace content, community content, D2C content. I didn't understand. So the consumers also get better. They get more of Sirona, and it played out also, you know, where content may, you know, there was the group had Miss Malini, Scoop Food, Pop XO. They understand women traffic. This was very interesting. This was very interesting. Content to commerce, and they were also offline with MyGlam. There are so many of these beauty channels which are available. So that was the reason I thought that everybody wins. I think in the bargain, the only person I think who was losing out was me, maybe as the founder, as a selfish founder who had started identifying so much with the business. Then I thought, okay, maybe kuch aur and make somebody else my love, you know. And that was the reason. I thought everybody benefits, and brand also benefit, customers also benefit. Interesting. I think this has set a very good precedent, right? Like if you look at the last couple of years, you will see recently like Minimalist getting acquired by HUL and Yoga Bars by ITC, Dot.me by Nykaa. You know, obviously you guys and Mom's company by the Good Glam Group, right? So I think like if you're a consumer founder today, like there are 3-4 very great channels where you can actually, you know, if you build a profitable business, अगर आप 20-30 crore revenue पे पहुंच चुके हो, you can actually tie up with somebody like a larger company as a distribution partner, and then you utilize a network like what you did, or actually go for an SME IPO as well. Like we had 190 SME IPOs last year, right? Essentially, that gives you liquidity of almost 3-4x. So I think from that perspective, अगर आप profitably बना रहे हो, well capitalized, you know, run the business efficiently, you have those opportunities available for you as founders, you know, over the next 4 to 5 years. Absolutely, no, the timing couldn't be better, of course. So it's a great time. There are far more opportunities. The playbooks are easier. The talent is easy to get now. You know, so timing couldn't be better. And what happens after a complete exit, right? Like what does a founder who is so passionate about building something and solving a problem and being day to day, you know, how do you kind of नहीं यार, I think आपने वो पोस्ट देखा था recently LinkedIn पे some founder who had made $800 million का exit and he didn't know what to do with my time and I didn't know what to do with this. Which is true, yeah, correct. And एक time के बाद ना वो आपके पास 1 करोड़ हो या 100 करोड़ हो या 1000 करोड़ हो, फर्क ही नहीं पड़ता है. You know, how much can you spend? How much can you acquire? You know, so I think, and like I said, the idea was never to say that, yeah, I'll make this money and I'll retire. It was always about saying that I'll make some money, fix a few things for family, ensure that some of the things are check marked, and so that I go back to the industry, I have options. But I think because I love startup environment, startup hustle, I found my happiness with some of these early stage startup founders. Is that as stimulating as running your own business? No. But I grapple with it myself, right? So no, it's not. But yeah, it's about saying ki I think when the time is right, I'm sure the next startup would come my way. Yeah, but till then, what I don't want is I just don't want to hard sell myself into starting something because यार अब समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, तो वो नहीं होना चाहिए था. So I thought that I have time. I have now 20 years of how not to do things behind me. So let me just go and discuss with friends and fall in love with some new founders who have the same passion that maybe passion, I'm just using it as a word, but you know what I had maybe in 2014. यार करूँगा कहाँ से होगा पता नहीं, but करूँगा. So I just now becoming an enabler and, you know, like paying it forward. Paying it forward, a sophisticated word, but I'm just trying to say that I have some skill sets. I had a little bit of money, and I could invest in passionate people who are not energy vampires. You know, who I love spending time with. So it's in many ways it became friendships, which just found. You know. How many investments have you done so far?
45 odd, maybe 50 now. God. And like from your, like now Deep the founder and Deep the investor, right? Like from your vantage point, like what are some categories in the consumer space that you are super excited by? Like personally, आप खुद ना करो, but you would love founders to see over the next few years. Well, so first Deep the founder, तो कोई Deep investor वगैरह कुछ नहीं है, थोड़ा सा वो अलग है, but I would say Deep as the believer in the ecosystem. Yeah. I would say there are many categories yet to be built. We are a very brand deprived nation. अभी तो brands है ही नहीं यार. Yeah. अब आसपास देखो इस room के अंदर कितनी चीजों में brand नहीं है, you know. अभी ऊपर से नीचे हम भी देखते हैं, maybe सिर्फ clothes and our attires have got branded. So multiple categories, and there are a lot of problem solving categories also. I believe menopause is a category that somebody should look at. And of course there must be people looking at it already. I believe we are launched aging. a brand in this category like yours. Yeah. Correct. And then we are aging very fast, so for elderlies Longevity. we need to look at this. And other than that, I think I just look at the spark in the founder's eye. Honestly, if I can tell you, like we're just discussing, goats. I mean, is it a big category? Where will it go? I just think, I just like the founder, and he was trying to say that I will find answers as I go along. So in many cases, I'm just doing this to say, somebody took a punt on me, I'm taking a punt on you. In many places, I'm doing this because I believe the founder is. What are some traits in the founder that you would look at? And from an early stage founder perspective, I'm asking, right? Like essentially when a founder is pitching, like essentially like what are some signals that you guys look at? यार तो मेरा कोई ऐसा कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है, बट मैं यूजुअली जरूर बोलता हूँ कि मेरे आप इंस्टिंक्ट ड्रिवन हो, राइट? सो हाँ, a lot instinct, a lot vibe, a lot like I said energy driven. तीन thesis हैं, know thy neighbor, know thyself, know thy neighborhood. तो सबसे ज़्यादा important है neighbor. So I love to meet founder in person and know the journey from him. In the journey, I try to find my reasons कि यार इसका why clear है भी या नहीं है. Jim Rohn says when the why is clear, how becomes easy. So so खुद का why clear है या बस इसलिए कर रहा है? और why मतलब top down होना चाहिए कि इंडस्ट्री कितनी बढ़िया है, या why मतलब होना चाहिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट? आप क्यों कर रहे हो? अच्छा, अगर आप इसलिए कर रहे हो कि यार कोई और कर रहा है या मुझे लगता है टॉप डाउन है, मतलब वो फिर आप लाइक दैट डजंट फिर वो आप एंथु खत्म हो जाएगा. सो योर व्हाई हैज टू बी वेरी क्लियर. वो फिर नेबरहुड में आता है, कितना बड़ा टैम है कि यार किस कैटेगरी में है, टैम है, सैम, वो सब बात की बात है. व्हाट इज हिज राइट टू विन इन इट, हाउ इज द टीम, इज देयर एनी टीम, हैज ही बीन एबल टू सेल द स्टोरी टू समबडी अदर देन हिमसेल्फ, खुद का क्या स्किन इन द गेम है. तो वो सब मिक्स हो गया. नो दाई सेल्फ मतलब मुझे पता है अब कि यार मुझे आई लाइक फिक्स्ड एक्विटीज, मेरे को सीसीडीज ज़्यादा नहीं समझ आते हैं बिकॉज आई एम वेरी अर्ली इन द गेम. I like consumer products. Clean deal that way. Consumer, I understand. I don't do bridges if I'm not in the first round. So वो थोड़ी सी philosophy है. But मोटा ये है कि यार I like to. I think for me the buck stops at the founder. For me it is the founder. Rest everything. If you get a good founder, he will find his way. Is what I think. Is my way of investing. No, I think same here. Like that's my thesis as well. I've done about 60 investments myself, and essentially. So you're far ahead in the journey, man. नहीं आपका तो check size like मुझसे 10x है. उससे फर्क नहीं पड़ता. किसी का मुझसे भी 10x होगा ना. So experience में आप हमसे बड़े हैं. नहीं but like अभी like कुछ notable वैसा नहीं है in terms of exits और वो, but at least like I also am a huge believer in India's consumer ecosystem, and I think that's something that I'm really passionate about. And then obviously like founders who are very passionate and building it for the right reasons. Chat on a थोड़ा सा serious topic, right? So this year, unfortunately, we have seen a lot of, like founders at a very young age pass away, right? I did a post also on it. Yeah, and and whether it's cardiac arrest, whether it's unforeseen reasons. I mean, do you think that founders are burning the candle at both the ends, and are we sacrificing too much for too little? Yeah, please have your own time, जिसको me time बोलते हैं. Have rest time, have family time. It is very, very important. I think one of the most important things. You cannot be just working, even if. So of course, at different stages of your life, you can put in more hours. I think early age में ज़्यादा hours डालने में कुछ गलत नहीं है, because यहाँ तो आप family नहीं है, शादी नहीं हुआ है, बच्चे नहीं हुए हैं. As you, so you need to understand that it's never a work-life balance. It's always it has to be in symphony. जिस दिन वर्क ज़्यादा है उस दिन लाइफ का बैलेंस थोड़ा कम है, बट इट नीड्स टू that chakra needs to keep resetting. And I think what you need to do is with as you change stages in life,
you know, you need to also ensure that you're spending time on other things also which are important. Like one of the things that I say is that हम सब business का तो AOP बना लेते हैं, annual operating plan, खुद का कहाँ है? Life का नहीं है, हाँ. खुद का कहाँ है? Nobody, and ये चार quadrants ही है ना यार. Health है उसमें, your family है उसके अंदर, you know, your career and all, and so whatever. Where is your own personal AOP? Yeah. It's tragic the way we've lost founders, and I think we'll lose more this year also, yeah. So very important to please prioritize your health and your mental well-being as well. You know, like I thank you for whatever you're doing for the ecosystem, and you know, looking forward to collaborate more. And likewise. Yeah, I think kudos again on your journey, and you know, wishing you the best for the next one. Thank you, sir. Thank you so much for having me, and congratulations on your journey and for whatever you're doing as well. Thank you.